वहलुल उकदा तमिल लिसानी यफ्कहू कौली। अच्छा जी, आज का जो लेसन है दैट इज द एनालिसिस ऑफ द पोएम क्रिस्टबल बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्रिस्टबल के अंदर क्या बताना चाह रहा है। अगेन एन इमेजिनेटिव पोएम, ठीक है। इसके अंदर कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर एक कैरेक्टर है दैट इज द क्रिस्टबल, और एक और कैरेक्टर है दैट इज द लेडी जेराल्डिन, और उसके बाद एक उसका फादर है सर लियोनाइन, जो कि क्रिस्टबल का फादर है। एक्सट्रीमली इमेजिनेटिव पोएम है। कहा यह जाता है कि सैमुअल टेलर ने इसके दो पार्ट्स लिखे, लेकिन थर्ड पार्ट पे इसका इनकम्प्लीट रह गया था। और ऑब्वियसली ये इसकी जितनी भी पोएम्स हैं सुपरनेचुरल पोएम्स हैं, तो ये तकरीबन एक इनकम्प्लीट सी पोएम है, जिसमें एक लड़की होती है, कंस्टेबल होती है, वो उसकी अपने नाइट से मंगनी हुई होती है, और वो उसके लिए दुआ करने के लिए वो किसी जंगल में जाती है। वहां पे उसको एक जो है जिसे कहना चाहिए एक सुपरस्टिशियस सी कोई एक लड़की मिलती है, जिसका नाम जेरल्डीन होता है। तो क्रिस्टबल इज अ लवली इनोसेंट यंग एंड वर्चुअस डॉटर ऑफ सर लियोनाइट। वन नाइट व्हाइल प्रेइंग इन द वुड्स, ठीक है, जंगल में वो दुआ कर रही होती है फॉर हर फियांस, शी वाज स्टार्टल्ड बाय एन अदर डिस्ट्रेस लेडी हु कॉल्ड हरसेल्फ जेरल्डाइन। जो अपने आप को जेरल्डाइन कहती है, वो एकदम से परेशान हो जाती है कि जंगल में मेरे अलावा जो है ये कौन सी लड़की है जो कि यहाँ पे मौजूद है। She further stated that she was kidnapped by a gang and left to jungle for an unknown reason. Geraldine says that she is the daughter of Sir रोलैंड डी वॉक्स, ठीक है। वो बताती है कि वो डॉटर है लॉर्ड रोलैंड डी वॉक्स की, ठीक है। एंड वंस अ फ्रेंड ऑफ सर लियोनाइन, जो कि कभी दोस्त था सर लियोनाइन का। द टू मैन quarreled एंड हैड नॉट स्पोकन फॉर ईयर। ये दोनों जो है आपस में लड़ पड़े थे, और कई साल तक ये दोनों आपस में इन्होंने बात नहीं की, यानी कि इनका कुछ फसाद चल रहा आपस में। और द टू मैन जेरल्डाइन, शी ब्रिंग्स जेरल्डाइन टू शेयर हर बेड, ठीक है। और वो जो है जेरल्डाइन को लेकर आती है। वंस इन द बेडरूम शी पुट्स अ स्पेल ऑन द पुअर इनोसेंट क्रिस्टबल, ठीक है। क्रिस्टबल उसको ले आती है, और वहां पे क्या करती है कि वो जो जेरल्डाइन है वो कुछ मैजिक स्पेल पुट कर देती है किसके ऊपर, क्रिस्टबल पे। And that makes it impossible for Christabel to tell anyone about what happened that night in the bed, कि वो नहीं बता पाती कि उस रात क्या हुआ। In reality, how she is wigged paranormal women disguised as Geraldine, ठीक है। In reality, वो एक big paranormal women थी जो कि disguised हुई as Geraldine. Christabel later on finds about her deception but is forced into silence by that black magic. Christabel जो है उसको अंदाजा हो गया था उसके धोखे का, लेकिन उस मैजिक स्पेल की वजह से एक्चुअली वो साइलेंट हो गई। When she finally breaks the spell and speaks about Geraldine deception, Sir Leonine rejects her entreaty, ठीक है। तो सर लियोनाइड ने जो है रिजेक्ट कर दिया इसके बारे में। एंड द लॉन्ग नैरेटिव पोएम एंड्स विद सर लियोनाइन sending a message telling लॉर्ड रोनाल्ड दैट हिज डॉटर इज सेफ एंड ऑफरिंग रीयूनियन, ठीक है। और उसकी डॉटर सेफ है जिसको कभी कोई उठा के ले गया था, और वो रीयूनियन यानी कि उनसे मिलना चाहती है। ऑकवर्डली बिफोर एनी कंफर्मेशन ऑन जेरल्डाइन आइडेंटिटी कैन बी एस्टैब्लिश्ड और डिनाइड, द पोएम एंड्स एब्रप्टली। और पोएम जो है यहीं पे एंड हो जाती है, बजाय इसके कि ये देखा जाता है कि वाकई ये जेरल्डाइन है या नहीं है। पोएम यहाँ पे इनकम्प्लीटेडली खत्म हो जाती है। बस इतनी ही ये कहानी है। Christabel just juxtaposes the theme of sin versus religiosity, evil versus devoutness, and sexuality versus purity. In this poem, the central character Christabel represents purity, religiosity, and devoutness, whereas Geraldine symbolizes evil, sin, and sexuality. Christabel is often found praying throughout the poem, and one of the most noticeable stuff in her bedroom is carving of an angel. In opposite to this, Geraldine says that she does not have the power to praise the Virgin Mary for being rescued by Christabel, ठीक है। उसके पास कोई पार नहीं होती कि वो प्रेस करे वर्जिन मैरी को
for being rescued by Christabel. The theme of mysticism is also dominant in Christabel, which is Coleridge's most prominent feature. ठीक है, यहाँ पे माइस्टिकिज्म रूहानियत को कहते हैं, सूफीइज्म को भी कहते हैं, ठीक है. और जेरल्डाइन इज कंट्रोल्ड बाय अ मिस्टीरियस स्पेल इन द पोएम. शी पुट्स सेम स्पेल ऑन क्रिस्टबल, ठीक है. और जेरल्डाइन जो है वो भी एक किसी मिस्टीरियस स्पेल की वजह से कंट्रोल हुई होती है, और वो यही सेम स्पेल जो है क्रिस्टबल पे भी तारी कर देती है. Once Christabel tangibly recovers from the spell, she seems to change. जैसे ही क्रिस्टबल जो है tangibly उस स्पेल से रिकवर होती है तो वो अचानक से चेंज हो जाती है. क्रिस्टबल compassion for Geraldine have vanished and she begs her father to cast Geraldine out of their home. क्रिस्टबल जो है उसका रहम जो होता है, कंपैशन, उसकी रहम दिली फॉर जेरल्डीन, वो वैनिश, खत्म हो जाती है, क्योंकि वो उसके धोखे के बारे में जान चुकी होती है. वो अपने फादर को कहती है कि जेरल्डीन को इस घर से निकाला जाए. क्रिस्टबल गोज फ्रॉम जनरस टू सेल्फिश. अब यहाँ से क्रिस्टबल जो है वो सेल्फिश हो जाती है. The taint of spell upon Geraldine and Christabel suggests the destructive power of mysticism. और ये taint of spell जो जेरल्डीन के ऊपर है और क्रिस्टबल, ये सजेस्ट करता है डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ माइस्टिकिज्म को. अच्छा जी, अब इसकी थीम्स के ऊपर चलते हैं कि बेसिकली इसमें इस पोएम के अंदर जो है, अगर हम एनालिसिस करते हैं इस पोएम का, तो वो क्या है. सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है, कि इमेजिनेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर्स जो है वो क्या क्या है. Coleridge believed that a strong active imagination could become a vehicle for transcending unpleasant circumstances. Many of his poems are powered exclusively by imaginative flights, wherein speaker temporarily abandons his immediate surrounding, exchanging them for an entirely new and completely fabricated experiences. अब यहाँ पे क्या है कि उसकी बहुत सी जो पोएम्स हैं वो पावर्ड हैं एक्सक्लूसिवली बाय इमेजिनेटिव फ्लाइट्स, जहाँ पे स्पीकर टेम्पोरेरीली अबंडन करते हैं उसकी इमीडिएट सराउंडिंग को, एक्सचेंजिंग देम फॉर एंटायरली न्यू एंड कंप्लीटली फैब्रिकेटेड एक्सपीरियंस को. और यूजिंग दिस इमेजिनेशन इन दिस वे इज बोथ एम्पावरिंग, और इस इमेजिनेशन को यूज करते हुए ये empowering भी है, surprising भी है, because it encourages a total and complete disrespect for the confines of the time and place. These mental emotional jumps are often well rewarded. Perhaps Coleridge's most famous use of imagination occur in this line three bore my prison, in which the speaker employs a keen poetic mind that allows him to take part in a journey that he cannot physically make. When he returned to the bower after having imagined himself on a fantastic stroll through the countryside, the speaker discovered as a reward plenty of things to enjoy from the inside the bower itself, including the leaves, the trees, and the shadows. The power of imagination transformed the prison into perfectly pleasant spot. उसके बाद है interplay of philosophy and poetry. Coleridge uses his poetry to explore the conflicting issues in philosophy and religious piety. Some critics argue the Coleridge's interest in philosophy was simply his attempt to understand the imaginative, intellectual impulses that fueled his poetry, to support the claim that his imaginative and intellectual forces were in fact organic and derived from the natural world. Coleridge linked them to God spiritually and worship. In his work, however, poetry, philosophy, and piety clash, creating friction and disorder for Coleridge, both on and off the page. In the Alien Half, Coleridge struggles to reconcile the three forces. Here, the speaker's philosophical tendencies, particularly the belief that an intellectual brief brushes by and inhabits all living things with consciousness, collide with those of his orthodox wife, who disapproves of his unconventional ideas and urging him to Christ. While his wife lies untroubled, the speaker agonizes over his spiritual conflict caught between Christianity and a pantheist spirit. ठीक है, अब क्या होता है कि जब वो अपनी इस वाइफ जो है वो एक his wife lies untroubled, तो स्पीकर एगनाइज करता है किसके ऊपर, उसकी अपनी स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, जो कि कॉट हो जाते हैं बिटवीन क्रिश्चियनिटी
और एक यूनिक इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी दैट इक्वेट्स नेचर विद गॉड, जो कि यूनिक। अब ये जो पैंथेइज्म होती है वो क्या होती है, वो नेचर को एज अ गॉड देखती है, ठीक है। एक तरफ तो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है, एक नेचर को गॉड के बराबर इक्वेट कर देना, ठीक है। एक्चुअली वो इस चीज को बात करता है। द पोएम एंड्स बाय डिस्काउंटिंग द पैंथेइस्ट स्पिरिट, ठीक है। अब वो डिस्काउंट कर देता है, डिसकंटिन्यू कर देता है उस पैंथेइस्ट स्पिरिट को। And the speaker concludes by privileging God and Christ over nature and praising them for having healed from the spiritual wounds inflicted by these orthodox views. Nature, the development of individual। अब हम देखते हैं कि नेचर किस तरीके से एक रोल प्ले करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ individual. Coleridge, Wordsworth, and other romantic poets praise the unencumbered imaginative souls of youth, finding images in nature with which to describe it. According to their formulation, experiences nature was an integral part of development of a complete soul and sense of personhood. The death of his father forced Coleridge to attend school in London, far away from the rural ideals of his youth, and he lamented the missed opportunities of his sheltered city-bound adolescence in many poems, including Frost at Midnight. Here the speaker sits quiet by a fire, musing on his life while his infant son sleeps nearby. He recalls his boarding school, sit quietly by a fire, musing on his life while his infant son sleeps nearby. He recalls, sorry, he recalls his boarding school during which he would board, daydream, and learn himself to sleep by remembering his home far away from city. And he tells his son that he shall never be removed from nature. The way the speaker once was, unlike the speaker, the son shall experience the seasons and shall learn about God by discovering the beauty and bounty of the natural world. The son shall be given the opportunity to develop a relationship with God and with nature. And the opportunity denied to both the speaker and Coleridge himself. For Coleridge, nature has the capacity to teach joy, love, freedom, piety, crucial characteristics for a worthy developed individual. Motives देख लेते हैं जी इसमें। सबसे पहले जो है ये कन्वर्सेशन पोएम्स हैं। Coleridge wanted to mimic the patterns and cadence of everyday speech in his poetry. Many of his poems only openly addresses a single figure, the speaker's wife, son, friend, and so on, who listen silently to simple, straightforwardly language of the speaker. Unlike the descriptive, long, digressive poem of the Coleridge classicist predecessors, Coleridge's so-called conversation poem are short, self-contained, and often without a discernible poetic form. Colloquial, spontaneous, and friendly, Coleridge कन्वर्सेशन पोइट्री ऑल्सो हाईली पर्सनल। अब यहाँ पे देखें बेटा, ये कन्वर्सेशनली पोइट्री है। कैसे कन्वर्सेशनली पोइट्री है कि जो क्रिस्टबल होती है ना, वो किसी जर्डीन नाम की लड़की से कन्वर्स करती है। और अगर हम इसकी जितनी भी पोएम्स देखें, जैसे हमने राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर देखा, तो वो राइम जो एंशिएंट मैरिनर होता है वो एक वेडिंग गेस्ट से एड्रेस करता है, तो वो भी कन्वर्सेशनली पोइट्री, कन्वर्सेशन पोइट्री है, ठीक है। सेम एज द यहाँ पे भी कॉलरिज जो है वो क्या करता है, क्रिस्टबल जो है वो कन्वर्स करती है किसी जेरल्डाइन नाम की लड़की से, और वो फिर अपनी एक स्टोरी सुनाती है, ठीक है। तो frequently incorporating events and detail of his domestic life in an effort to widen the scope of possible poetic content. Although sometimes he sometimes wrote in blank verse, unrhymed iambic pentameter. He adopted the metrical form to suit a more colloquial rhythm. Both words and College believed that everyday language and speech rhythms would help broaden poetry endeavors to include the middle and lower classes, who might have felt excluded or put off by the form and content of neoclassicals such as Alexander Pope, Lady Mary, Montagu, and John Dryden. Delighted in natural world. Like the other romantic scholars, worshipped nature and recognized poetic capacity to describe the beauty of the natural world. Nearly all quoted poets express our respect for and delight in nature beauty. ठीक है, यहाँ पे भी रात की बात हो रही है. Close observation, great attention to detail, and precise description of color aptly demonstrate Coleridge's respect and delight.
Some poems such as The Lime Tree Bore My Prison, Youth and Age, and Frost and Midnight warn speaker physical isolation from the outside world. अच्छा जी, यहाँ पे देख लें बेटा, ये अगेन यहाँ पे कुबला खान और राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जो कि आप लोगों की के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, उसका इवन poems that don't directly deal with nature, including Kubla Khan and Time of Ancient Mariner, derive some symbols, images from nature. Nevertheless, Coleridge guarded against the pathetic fallacy or the attribution of human feeling to natural world. To Coleridge, nature contained an innate constant joyousness, wholly separate from the ups and downs of human experience. एक और जो थीम है इसमें द क्रिस्टबल के अंदर, वो है द प्रेयर. Although Coleridge prose reveals more his religious philosophizing than his poetry, God, Christianity, and the act of prayer appear in some of form in nearly all of his poems. ठीक है, जितनी भी हमने poems देखी उसमें हमने prayer की थीम जरूर देखी है. इवन हमने राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में भी देखा कि वो एंड पे जाके प्रेयर करता है. ठीक है, इसी तरीके से हम जो है वो कुबला खान में भी देखते हैं कि एंड पे जाके ना वो जो स्पीकर होता है वो कहता है आई प्रे कि भाई मैं आसमान पे एक जो है वो बनाऊं, एक महल तामीर करूं इस वॉइस के थ्रू, कि पूरी दुनिया इसको देख सके और ये मैसेज जो है पूरी दुनिया को पहुंच सके. तो प्रेयर इज द बेसिक थीम जो कि वो हमेशा अपनी तमाम पोएम्स के अंदर यूज करता है, जो कि हमें क्रिस्टबल के अंदर भी नजर आए. The son of an Anglican vicar, Coleridge vacillated from supporting to criticizing the Christian tenets at the Church of England. Despite his criticism, Coleridge remained defiantly supportive of prayer, praising it in his notebooks and repeatedly referencing in his poem. He once told the novelist Thomas D. Quincy that prayer demanded such close attention that it was the one of the hardest action of which human hearts were capable. The conclusion to part one, Christabel poetry is Christabel in prayer, a lovely sight to see. In the rhyme of ancient mariner, the mariner is stripped of his ability to speak as a part of his extreme punishment. बेटा ये आपने जो है ना, इनको आपने देख लेना, part of his and consequently left incapable of praying. The pains of sleep contrast the speaker at restful prayer in which prays silently with the speaker passionate prayer in which he battles imaginary demons to pray aloud. In sad poem Epitaph, Coleridge composes an epitaph for himself. He urges people to pray for him after he dies. Rather than recommend a method of prayer, Coleridge poems reflect a wide variety which emphasizes his belief in the importance of individuality. उसके बाद जो है यहाँ पे देख लें बेटा, ये थोड़ा सा इसका स्टार्टिंग में ये ऐड कर लीजिएगा कि क्रिस्टबल इज एन अनफिनिश्ड गॉथिक बैलेट रिटन बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज. It was finished in 2 years. First part 1797 and second part 1800, which was published in 1816. Christabel, Kubla Khan, Evision, The Pains of Sleep. The story of Christabel is about a central female character of a young lady named Christabel and her encounter with a stranger called Geraldine. She claims to have been kidnapped from her home by a band of rough men. ठीक है, ये इसका बेटा वो है. और बाकी ये इसकी ये अभी हम पढ़ चुके हैं. अच्छा जी, क्रिस्टबल एनालिसिस बेटा ये आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से ये मैंने सारे स्टैंजास अलोंग विद आपके इसमें ऐड कर दिए हैं कि वो क्या क्या उसके साथ होता है, और इसका सारा टेक्स्ट अलोंग विद स्टैंजास जो है यहाँ पे गिवन है. और मेरे ख्याल में टेक्स्ट पढ़ ही लेते हैं.